Good evening, everybody. Wishing you all a very happy Dhanteras and happy Diwali. दिवाली एक ऐसा फेस्टिवल जिसे हम खूब एंजॉय करते हैं, लाइट्स के साथ, दियों के साथ, मिठाइयों के साथ, पूजा के साथ और पटाखों के साथ, राइट? दिवाली एक ऐसा फेस्टिवल जो हमारे लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज लेके आता है, बुराई पर अच्छाई की जीत का मैसेज। एज एन इंडिविजुअल कैसे हमें अपने अंदर की बुराइयों को खत्म करके अपने अंदर कुछ ऐसी अच्छाइयां लानी चाहिए जिससे हम अपनी और दूसरों की लाइफ को बेटर बना सकें। दिस इज व्हाट दिवाली मीन्स। कुछ ऐसा ही मैंने भी आज एक्सपीरियंस किया और खुद से एक वादा किया कि मैं भी अपनी लाइफ में ये चेंज इस दिवाली पे जरूर लाने की कोशिश करूंगी और अपनी और अपने नए दोस्तों की लाइफ को बेटर बनाऊंगी। आज मैं अपनी एक फ्रेंड को दिवाली विश करने जा रही थी एंड एज यूजुअल आई गॉट स्टक इन दिल्ली ट्रैफिक एंड दैट टू फॉर 1.5 hours. Believe me, those 1.5 hours were horrible for me. There was no traffic light, there was no traffic police, and all I can hear was banging horns. And I was sitting in my car helpless like this. As soon as I reached to my friend's place, only one thing I told her, please मुझे एक सर दर्द की गोली दे दो. Within 20-25 minutes I was better, and then we had coffee, giggles and gossip, and then time to say goodbye. As soon as I reached outside the door, I noticed कि main door के अंदर कुछ 6-7 carpets रखे हैं छोटे छोटे. And to my surprise, I asked her, what is this? It's Diwali time. Why you kept these carpets over here? And the answer came from her. ये मेरे दिवाली guests के लिए है. I laughed. And then she took me outside the main door. और कॉर्नर में ही आई नोटिस कि वहां पे 6-7 स्ट्रे डॉग्स थे. कुछ खाना खा रहे थे, कुछ खेल रहे थे और कुछ सो रहे थे. Believe me, it was a beautiful sight. I'm not a dog lover, but yes, it was a beautiful sight. And then she told her, they are my Diwali guests and they are going to stay with me on Diwali night. I was blank. And then what she told me was a big lesson for me. तभी मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया कि दिवाली नाइट्स फेस्टिव नाइट होती है हम लोगों के लिए, बट फॉर देम इट्स अ हॉरिबल नाइट. बिल्कुल वैसे ही जैसे वो ट्रैफिक मेरे लिए हॉरिबल था, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो नॉइजेस मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी और मैंने अपनी उंगलियां अपने कानों में डाल ली थी. एंड देन शी टोल्ड मी दैट दे कैन हियर 10 times more than us. यानी कि एक पटाखे की आवाज जिसे देख के हम मुस्कुराते हैं, हंसते हैं और हमारे बच्चे इंजॉय करते हैं, इट इज इक्वल टू द वॉइस ऑफ अ न्यूक्लियर बॉम्ब फॉर दीज ट्रेज. इमेजिन आपको पूरी रात न्यूक्लियर बॉम्ब्स की आवाज सुनाई दे फटते हुए, तो आपका क्या हाल होगा? जस्ट इमेजिन. They have the power to hear the voices 10 times more than human beings. They don't have fingers to put in their ears, just like I did. They cannot ask for medicines like I did to my friend. They cannot express that they are feeling scared of these voices, which we can say. They don't have homes to go and dig in themselves inside so that they can feel secure. Their home are roads, जहां पे हम इन बॉम्ब्स को फुटा रहे हैं. एंड अनफॉर्चुनेटली इससे डर के इन्हें अपनी टेरिटरी से बाहर जाना पड़ता है. दे रन फ्रॉम देयर ओन प्लेसेस, बट अनफॉर्चुनेटली इनको कोई जगह नहीं मिलती बिकॉज एवरीबडी इज बर्स्टिंग क्रैकर ऑन दिवाली नाइट. सो माई फ्रेंड टोल्ड मी कि उस रात को ये इन सबको अपने घर में जगह देने वाली है, अपने पास सुलाने वाली है. एंड आई वॉज सो टच्ड, आई वॉज सो मूव्ड विद दिस थॉट, what she told me and what she was going to do on Diwali night. This is the real message what this festival brings. So friends, please, I request you all to celebrate this Diwali
as much as with fun you want. Light candles, enjoy sweets, do your pujas, put rangolis, but say no to crackers. Have a noiseless Diwali for these voiceless beings. And indirectly, it will be a pollution-free Diwali for you too, which is good for your health. Love yourself, love strays. Happy Diwali.